So guys, we did with yield now. So yield हो गया अपना, that is CY and YTM. We go to the next thing, that is finding the value of the bond. Valuation of a bond. Value of a bond is equal to as good as equity, present value of all future cash flows. Present value of all future cash flows. Are we clear with that one? अच्छा, bond valuation में भी exactly working तो types of bonds से ही होगा. First of all, if we have got a types, मैंने यहाँ पे already बना के रखे आपके लिए. It's a ZCB, zero coupon bond. I told you last time also, zero coupon bond, a bond which is issued at discount. So basically ZCB का value निकालना मतलब present value निकालना. So for example, a question on a ZCB, a bond with face value of 100, redeemable after 3 years, yielding 12%. Find the value. In simple language, this is a bond, maturity period 3 years. After 3 years, I am going to get 100. Yield, my return on this bond is 12%. If I want to earn 12% on this bond, how much the value of the bond should be? So in simple language, ये लोग क्या बता रहे हैं पता है आपको? 1, 2, 3. I'm going to get 100 right now. I will have to calculate the present value at the rate 12%. That's it. So guys, the PV will be equal to 100 divided by 1.12 raised to power 3. As simple as that. So 100 divide by 1.12 divide. 100 divided by 1.12, 1, 2, 3. I'm getting an answer of rupee 71.18 per bond. That's the value of the bond. अगर आपको चेक करना है, then a very simple way, 71.18 into 1.12 into 1.12 into 1.12 and you will get the value of the bond. Clear? Too good. This is the value of a ZCB. चलो और आगे आ जाओ. ZCB के बाद हम लोग आते हैं bond with coupon fixed and floating. Again guys, we cannot calculate the value of the floating bond. I cannot calculate the yield of a floating bond. I cannot even calculate the value of the floating bond because floating bond में coupon keeps on changing. So I can calculate a value of a plain vanilla bond and I can calculate the value of a non-plain vanilla bond. Plain vanilla, non-plain vanilla. Plain vanilla, if you remember, the rate of interest is fixed, same I would rather say, and redemption is going to happen at the end. आपके books में एक question रखा है मैंने. I'm looking at question number 4. Please. Question number 4. A bond with 5-year maturity, rupee 5,000 face value, which pays coupon at the rate 12% semi-annually. Guys, please underline the word semi-annually. The bond will be redeemed at a premium of 5% at the end of 5 years. Similar bonds in the market are presently yielding 8%. Find out the intrinsic value of the bond. Now, first of all, you need to realize, is it a plain vanilla or a non-plain vanilla bond? Redemption at the end of 5 years, coupon rate 12% semi-annually fixed. So basically, if I look at the structure here, semi-annually, 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. Coupon for 10 periods and redemption. और अब ये सब का मुझे present value निकालना है. Now what you can do in plain vanilla, if you remember a shortcut that I have given to you, rather than pulling up one amount, can I say this amount can be pulled as annuity and this is one amount to be pulled up? In this case,
द प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कूपन into PVIFA I, N plus redemption into PVIF I, N. PVIFA, PVIF, present value interest factor for annuity, present value interest factor, है ना? Coupon. Bond is going to give you a coupon of 12%, that is semi-annually. Guys, 5,000 का 12%, 5,000 का 12%, is it 600? Into PVIFA, 5,000 का 12% was 600, semi-annually is 300 into 300 पता चला ना कैसे आया, बिकॉज इट वॉज सेमी एनुअली, एनुअल होता तो नहीं. एंड प्रेजेंटली यील्डिंग सिमिलर बॉन्ड्स का यील्ड इज 8%, अगेन वो पर एनम अपने सेमी एनुअल यील्ड निकालना पड़ेगा इनटू PVIFA 4%, 10, 8% का हाफ 4%, 10, 5 years, सेमी एनुअल पीरियड, 10 periods plus redemption. The bond is redeemable at a premium of 5%. Guys, 5,000 into 1.05, I'm getting 5250 into PVIF 4%, 10. Are we clear with that one? चलो, फैक्टर्स निकालना आपका काम है, मैंने आंसर्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं. सो आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे 300 into PVIFA 4%, 10, 5250 into PVIF 4%, 10. I'm getting an answer of 5682.6. 5682.6. Are you getting that? Class na? Too good. Value of which bond? Plain vanilla. अच्छा, अगर वो नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड होगा तो, इफ यू रिमेंबर नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड, तो what happens in a non-plain vanilla bond? This coupon keeps on changing. तो in that case अगर आपको याद हो तो मैंने कहा है कि आपको एक टेबल बनाना है 1, 2, 3, 4, 5 और फिर इसके कैश फ्लोज कूपन 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 कूपन, अगर रिडम्पशन आ रहा है तो रिडम्पशन, जहाँ पे भी रिडम्पशन आ रहा है कैश फ्लोज, दिस कूपन्स विल कीप ऑन चेंजिंग, दिस रिडम्पशन विल कीप ऑन चेंजिंग, और फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. अभी एग्जैक्टली क्लियर याद आ रहा है? वो एक टेबल बनाना है, और वैसे ही ये चैप्टर के एंड पे मैंने एक शीट बनाया, जैसे मैंने इक्विटी में भी कहा था. आई हैव गिवन यू फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टू सॉल्व ऑन योर ओन सेल्फ. यू विल फाइंड वन क्वेश्चन जहाँ पे ये टेबल बना के आपको काम करना है. पक्का? क्लियर? टू गुड. So coming back, we have plain vanilla, non-plain vanilla, callable and putable को हम plain vanilla में डाल सकते हैं, non-plain vanilla में डाल सकते हैं, depends upon what it is. Floating coupon bond का valuation आप निकाल नहीं सकते हो. Perpetual bond का value always is CF upon I. So for example, if I tell you a bond of face value 100 gives a coupon of 20. लिखूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन, फेस वैल्यू 100, कूपन 20%, यील्ड 25%. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड? अच्छा, सिंपल सा काम, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू CF 20% ऑफ 100, 20 डिवाइडेड बाई 20% नहीं करना, 25%. So divided by 25%. Calci हाथ में ले लो. So it's a simple thing now. 20 divided by 25 is equal to ₹80 per bond. Got that? Too good. Good doubts? जकास वाला काम हो गया. This is valuations. So फिर से आपको एक बार याद करा दूं. ZCB
मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. प्लेन वेनिला बॉन्ड पीवी ऑफ कूपन प्लस पीवी ऑफ रिडम्पशन. नॉन प्लेन वेनिला बॉन्ड एक टेबल बनाना है, और परपेचुअल बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू सी एफ अपॉन आई. टू गुड. अच्छा, इसके बाद इफ यू रिमेंबर मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको क्लास में, दैट इज स्पेशल केस ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन. व्हाट इफ आई वांट टू बाय द बॉन्ड इन बिटवीन द कूपन डेट्स. मैं डायग्राम बना के याद कराता हूं आपको. इफ आई वांट टू बाय द बॉन्ड इन बिटवीन द कूपन डेट्स, so now that's my bond 1 2 3 4 5 coupons है. this is coupon 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 and redemption. अब तक हम लोग जो भी क्वेश्चन देख रहे थे ना, that was I was buying a bond here. if I'm buying the bond from the starting, then it is present value of all the future cash flows, so we used to pull them back. अगर प्लेन वेनिला था तो पीवी ऑफ कूपन पीवी ऑफ रिडम्पशन. नॉन प्लेन वेनिला था तो टेबल बनाते थे. What if I want to buy a bond here, standing here? 4 steps. 4 steps. Step number 1, calculate clean price of the bond on the next coupon date. So I told you in this case, for example, this is I will say December. Let's say this is 1st of August. So I said next date पे जाके खड़े रह जाओ, और यहाँ पे खड़े रह के पहले वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करो. नाउ वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज. ये कूपन हमें नहीं मिलेगा बिकॉज हम यहाँ पे खड़े हैं. 1 2 3 कूपन 1 कूपन 2 कूपन 3 रिडम्पशन is equal to clean price of the bond on the next coupon date. Step 2, calculate dirty price of the bond. How to make it dirty? ये कूपन भी उसमें ऐड कर दो, so dirty price हो जाएगा. Step 1, calculate clean price on the next interest date. Step 2, calculate dirty price of the bond on the next interest date. Step 3, calculate dirty price of the bond on the date of purchase. That means अब आप यहाँ पे आ जाओ भाई. अगर आपको 1st of August को आना है, अगर आप December पे खड़े हो, so you will have to pull them back by 5 months. So you will have to calculate the present value जो step number 2 पे आया ना, उसका present value, pulling them back by 5 months. If the yield that they have given to you is 12% per annum, तो 5 months से pull back करना है खाली, will be equal to 5%. So you will pull it back by 5%. Is this clear? Okay. And then this is still dirty. Calculate clean price of the bond. How to calculate clean price of the bond? ये 7 months का इंटरेस्ट उसमें से माइनस कर दो. बिकॉज आपने जब पहले ये इंटरेस्ट यहाँ पे कूपन ऐड किया था ना, यू एडेड द एंटायर पीरियड का कूपन. बट मुझे तो यहाँ पे खरीदना है, तो फर्स्ट 7 months इज नॉट माइन. तो पहले पूरा ऐड करके हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर ये 7 months का कूपन माइनस कर देता है. 4 steps. योर बुक्स. स्पेशल केस ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन, इट रिफर्स टू द वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड इन द मिडल आफ्टर द इश्यू. स्टेप 1, calculate clean price on the next interest rate, that is PV of coupon plus PV of redemption. Calculate dirty price on that date, add the interest. Calculate dirty price on the date of valuation, the present value, and calculate clean price on the date of valuation less that interest. और इसके लिए मैंने आपके बुक्स में एक क्वेश्चन भी रखा है. आप वही क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए, and that will complete your whole valuation structure. Concept clear. Valuation of a perpetual bond, valuation of a ZCB, valuation of plain vanilla, non-plain vanilla, and special case of bond valuation. Correct? Too good. Take it ahead. Valuations के बाद I move ahead and go to something that is known as duration. Duration is very simply means within what period I get my money back. Within what period I get my money back. और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है ड्यूरेशन के लिए.
and the formula is duration is equal to summation wx upon summation w. Check your books out, guys. Summation wx upon summation w. I'm on page number 30. Duration refers to weighted average time to receive the present value of the bond. Duration is also known as Macauley's duration. It is calculated by using the following formula, that is duration is equal to summation wx upon summation w. पक्का? आपके वो शीट पे देखेंगे, मैंने एक क्वेश्चन रखा है, मैं उसका कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा आपको. फर्स्ट वन, फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000. क्वेश्चन 1000. Next one, coupon rate is 8%. Years to maturity, 8 years. Redemption or YTM, redemption is at par, and YTM, that is yield to maturity, is 17%. Guys, don't confuse yourself with coupon rate and yield to maturity. Coupon rate is only to calculate coupons. Discounting करते वक्त जो present value calculate करना है, वहाँ पे coupon rate नहीं चाहिए, YTM चाहिए. They are asking you to calculate the current price and the duration of the bond. So they are asking you current price and duration. Current price question mark, duration question mark. अगर आप ड्यूरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट प्राइस मिल ही जाएगा आपको. फॉर्मूला समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू. टेबल ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8. कैश फ्लो कूपन 1000 का 8%, 1000 का 8%, 80 80 80 80 80 80 80 1080. Why 1080? Because 1000 रिडम्पशन भी आ जाएगा. अच्छा, ये जो years है ना, this is x for us. और कैश फ्लो का हम लोग प्रेजेंट वैल्यू लेंगे एट द रेट ऑफ YTM, दैट इज 17%. ये हमारे लिए हो जाएगा W. याद आ रहा है सब कुछ? सो 80 डिवाइड बाय 1.17, 68.38, 58.44, 49.95, 42.69, 36.49, 31.19, 26.66. Are you calculating with me? Okay. 1080 वापस चेंज करना पड़ेगा. 1.17, 1 2 3 4 5 6 7 8, 307.56 WX. पहले X का टोटल ले लेते. 68.38 प्लस 58.44, 49.95, 42.69, 36.49, 31.19, 26.66, 307.56. Total is 621.36. Jakas. WX 68.38 into 1 is 68.38, 58.44 into 2 116.88, 49.95 into 3 149.85, 42.69 into 4 170.76, 36.49 into 5 182.45. Next one, 31.19 into 6 187.14, 26.66 into 7 is 186.62. ऊपर वाला चेक कर लेता हूँ मैं, करेक्ट है. 307.56 into 8, 2460.48 plus 186.62 plus 187.14 plus 182.45 plus 170.76
plus 149.85 plus 116.88 and plus 68.38. Total comes to 3522.56. Jackass. And 622, first one, current price rupees 621.36 per bond. What was the value of the bond? Is equal to present value of all future cash flows. So सारे cash flows लिए उसका present value आ गया. So present value of the bond मिल गया. And second, duration is equal to summation Wx upon summation W is equal to 3522.56 divided by 621.36 is equal to 621.36 is equal to 5.67 years. You will get the present value of your money back in 5.67 years. अगर थोड़ा कॉमन सेंस याद है आपको गाइस, सो आई टोल्ड यू दैट अगर बॉन्ड में कूपन आ रहा है तो ड्यूरेशन विल बी लेस देन द मैच्योरिटी. मैच्योरिटी इज 8 years, हमें तो कूपन मिलने लगता है पहले से, तो भाई ड्यूरेशन विल बी लेस देन 8 years. पक्का. सो ड्यूरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला काफी है, समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू. चकास, क्लियर, टू गुड. चलो ड्यूरेशन से आगे जाते हैं एंड वी गो टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिस्क. अच्छा, रिस्क में क्या पढ़ना था? आर बॉन्ड्स हैविंग एनी रिस्क? यस. एंड रिस्क ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज इन इट्स वोलेटिलिटी, मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट. प्राइस ऊपर होता है, प्राइस नीचे होता है, तो वो रिस्क है. Equity risk is also its movement. That's beta of equity. A higher beta stock is assumed to be highly risky. A lower beta stock is assumed to be less risky. Na? So, risk is always in the movement. And to calculate volatility, that is movement, we need to calculate duration जो हमें आता है. And then we need to calculate two things. Volatility के लिए दो formulas हैं हमारे पास, that is ED and MD. इफेक्टिव ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन. आइए रिस्क पे जाते हैं. रिस्क इज इक्वल टू वोलेटिलिटी इज इक्वल टू ED and MD. That is effective duration and modified duration. Question please. Bond risk वो systematic unsystematic आप पढ़ते रहना. I can see duration and volatility. Duration का formula एक बार फिर से लिखा है, that is summation WX. I'm on page number 33. उसके नीचे volatility आप देखेंगे, effective duration and modified duration. Effective duration, that is ED is equal to P2 minus P1 upon 2 into P0 into change in Y. P2 is a higher price of the bond, P1 is the lower price of the bond, 2 into P0, P0 is the current price of the bond into change in the yield. That is shock, if you remember. And second one, shortcut, MD, modified duration is equal to D upon YTM. D upon YTM. Too good. इसके लिए एक क्वेश्चन फिर से प्लीज. सो एक बार ड्यूरेशन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और वोलेटिलिटी भी प्रैक्टिस हो जाएगा. एंड आई एम लुकिंग इनटू क्वेश्चन. अ 5 year 1000 फेस वैल्यू क्वेश्चन में फेस वैल्यू 1000, मैच्योरिटी 5 years, कूपन 12%, yield 14%, volatility 50 basis point, and you are required to calculate ED and MD. है ना? Okay. First things first,
I would go by calculation of MD, that is D by YTM. बट उसके लिए पहले हमें D कैलकुलेट करना पड़ेगा. D, if you remember D का फॉर्मूला, D is equal to summation WX upon summation W. Year 1, 2, 3, 4, 5. Cash flow coupon 12% on 1000, 120, 120, 120, 120, 1120. Present value at the rate 14%, and then we go for summation WX, है ना? So calcies again guys, 120 divide by 1.14. please mistake से 12% मत ले लेना फिर से. So 105.26, 92.34 आ रहा है आपको. 81, 99.80 पर 99 है इसीलिए 71.05, and finally 1120 divided by 1120 divided by 1.14. 1 2 3 4 5 581.69 into 5 भी कर लेता हूँ. 2908.46, 105.26, 92.34 into 2 is equal to 184.68. 81 into 3, 243, and 71.05 into 4 is 284.2 plus 2908.46 plus 243 plus 184.68 plus 105.26. Total is 3725.6. Total 105.26 plus 92.34 plus 81 plus 71.05 plus 581.69. Total is 931.34. So D is equal to, ऊपर लिखा है वहीं पे लिख देता हूँ, 3725.6 divided by 931.34 divided by 3725.6 divide equal to, I am getting exactly 4 years. Duration आ गया. ED and MD. MD shortcut and modified duration is equal to D by YTM. D was 4 years, YTM is 0.14. That is 14%, but factor पे 1.14 लेना भूलना नहीं. अगर आपको चाहिए तो यहाँ के फॉर्मूला पे 1 plus YTM आप लिख सकते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेक्चर्स में भी कहा आपको मैंने. So going ahead, 4 divided by 1.14 is equal to 3.51%. Volatility is 3.51% का मतलब है that if bond rate, that is coupon rate, that is yield, not the coupon rate, if the yield changes by 1%, the price of the bond will change by 3.51% in the opposite direction. Yield changes by 1, bond price will change by 3.51 in opposite directions. That means if yield increases by 1%, the price of the bond will fall by 3.51%. If yield falls by 1%, price of the bond will increase by 3.51%. Clear? Too good. Quick doubts? अच्छा, this is MD. MD के बाद we can calculate ED. ED. That is effective duration is equal to P2 minus P1 2 into P0 into change in Y. तो आपको पहले ही 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, P0, P1 and P2. सबसे पहले मैं P0 कैलकुलेट कर लेता हूँ. करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू PV ऑफ कूपन प्लस PV ऑफ रिडम्पशन
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने लास्ट टाइम जब भी वो प्रेजेंट वैल्यू भी निकाला था तो वही आंसर था, बट फिर भी एक बार ये फॉर्मूला से प्रैक्टिस कर लेते हैं. कूपन 120 इंटू PVIFA 14%, 5 प्लस 1000 into PVIF 14%, 5 clear now, is equal to 120 into 1.14 divide 1 2 3 4 5 plus 1000 into 0.519 GT 3.433. 120 into 3.433 is equal to 411.96 plus 1000 into 0.519 प्लस 411.96. बच्चों की तरह मैं एक एक कैलकुलेशन कर रहा हूँ पागल की तरह. 930.96. दैट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. और अगेन थोड़ा कॉमन सेंस, क्लास के टाइम बहुत दिमाग लगाया ये सब आपको सिखाने के लिए. इफ यील्ड इज मोर देन कूपन, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड हैज टू बी लेस देन फेस वैल्यू. If yield is more than coupon, price of the bond has to be less than 1000. Anyways, P0. P1, higher price of the bond. 120 into PVIFA. Interest rate shock was 50 basis point. Price of the bond बढ़ाना है तो interest कम कर दो, yield कम कर दो. Yield होगा 13.5%, 5 plus 1000 into PVIF 13.5%, 5 is equal to 120 into plus 1000 into 1.135 divide 1 2 3 4 5 0.531 and GT 3.475 into 120. I'm getting an answer of 416.97. वापस मैंने मिस्टेक कर दिया. 1000 into 0.531 plus 416.97. Answer is 947.97. This is P0. This is P1. Sorry, P2. Higher price of the bond. P1, lower price of the bond. P2 minus P1 divided by 2 into P0 into change in Y. So now we go for P0. 120 into PVIFA 14.5%, 5 plus 1000 into PVIFA 14.5%, 5. Are you able to recall all this? 120 into plus 1000 into, so 14, 1.145 divide 1 2 3 4 5 0.51508 and oops 1.145 divide 1 2 3 4 5 GT 3.392. अब डायरेक्ट कैलकुलेशन ही करके मैं दे देता हूँ आपको, छोटा छोटा कैलकुलेशन नहीं दे रहा हूँ. 915.06. You can say 07. P1. So you now have P0, P2, P1 दोनों है. ऊपर जाते हैं. P2 minus P1. P2 947.97 minus 915.07 divided by 2 into P0 930.96 into change in Y 50 basis point 0.5 percentage is 0.005. 0.05 करोगे तो भी 5% आएगा. This was 0.5 percentage. Clear? Okay. 947.97 minus 915.07 is equal to 32.9 divided by 2 into 930.96 into 0.005. 9.3096 is equal to divided by 32.9 divide
equal to 3.51%. Exactly same. If the yield changes by 1%, the price of the bond will change by 3.51% in the opposite direction. If yield increases by 1, price of the bond decreases by 3.51. If yield decreases by 1, price of the bond will increase by 3.51. पक्का? झकास. रिविजन जा रहा है बरोबर से आपका? टू गुड. आगे जाए. चलो अब हम लोग आगे जाते हैं. The concept that we are going to go new one. Term structure, spot rates and forward rates. Term structure is nothing but a relationship between the maturity, that is years 1, 2, 3, 4, and its spot rates. So maturity and spot rate एक table बना दो, इसे हम कहते हैं term structure. And then we have something that is known as spot rate. वो spot rate तो वहाँ पे term structure में आ जाता है forward rates. I'll explain you that. Spot rates and forward rates and the term structure. क्या था इसमें पता है? टर्म स्ट्रक्चर के लिए year 1, 2, 3 and spot rates 10%, 10 point, or I can say 11%, and let's say 10.5%. That's a term structure. Term structure का मतलब है maturity and its spot rate. So when I say a bond for 1 year, it will give you a yield of 10%. A bond of 2 years, a 2-year bond maturing after 2 years, that's a 2-year bond, will give you 11% on an average for both the years. मतलब year 1 11, year 2 11, average 11% return देगा. And this returns are always percentage per annum. So misinterpret करके ऐसा नहीं सोचना कि 2-year का bond will give you 11%. 11% per annum. 3-year का bond will give you 10.5% per annum. So this is term structure, relationship between maturity and its spot rate. Term structure, and then we have got something that is known as forward rates. अब forward rates क्या था? Now for example, spot rate is denoted by the word RON. That is, for example, RO1 is equal to 10% and RO2 is equal to 11%. Interpretation है that bond A with maturity of 1 year gives you 10%. Bond B with maturity of 2 years gives you 11% per annum. So how much is F12? F12 का मतलब है what is the return in the second year? पहले साल में एक बॉन्ड 10% देता है, दूसरा बॉन्ड 2 साल का है, वो भी पहले साल में 10% ही देगा. See, every bond, no matter what that maturity is, will give you same return in that particular year. So I say bond A, bond B, bond C, 1 year maturity, 10 year maturity, 12 year maturity, everybody will give you same return for the first year. But second year, 2 years का average, this is not second year का return, this is 2 years का average return is 11%. So F12, can I say has to be higher than 11%? पहले साल 10 मिला था, बाद में 2 साल का एवरेज 11 हो गया. दैट मीन्स हमें सेकेंड ईयर में कैन आई से मोर देन 11 मिला है. पक्का? दैट इज फॉरवर्ड रेट्स. अच्छा, टर्म स्ट्रक्चर 2 टाइप के बॉन्ड्स का निकालना होता है. फर्स्ट वन इज ZCBs. ZCB का टर्म स्ट्रक्चर निकालना सबसे सिंपल है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहां पे देता हूं that we have bond A, B, C, maturity 1 year, 2 year, 3 year, and its present value 900, 825, 750. So हमें यहाँ पे इसके स्पॉट रेट्स निकालने हैं. बहुत ही सिंपल. फर्स्ट वन 900 आफ्टर 1 ईयर, उसका प्रेजेंट वैल्यू. Second, 825 after
2 years उसका प्रेजेंट वैल्यू. थर्ड वन 750 आफ्टर 3 years उसका प्रेजेंट वैल्यू. और यहाँ पे जो रेट्स आ जाएंगे वो आपके होंगे स्पॉट रेट्स, है ना. बहुत सिंपल है. कॉम्प्लिकेटेड क्या था पता है आपको? अ कूपन बेयरिंग बॉन्ड. कूपन बेयरिंग बॉन्ड का अगर टर्म स्ट्रक्चर बनाना है, दैट मीन्स अगर स्पॉट रेट्स कैलकुलेट करने हैं तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट नोन एज बूटस्ट्रैपिंग. बूटस्ट्रैपिंग मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू करके निकालना है. आई विल पिक अप अ क्वेश्चन नॉट ऑन दिस ZCB, आई विल पिक अप अ क्वेश्चन ऑन कूपन बेयरिंग बॉन्ड, उस पर टर्म स्ट्रक्चर और उस पर फॉरवर्ड रेट्स. बैक टू योर टेक्स्ट बुक. एक क्वेश्चन बनाया मैंने. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट्स. एंड आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग द स्पॉट रेट्स, फॉरवर्ड रेट्स, टर्म स्ट्रक्चर, सब कुछ ऑन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट वन देखते हैं. चैप्टर का नाम रहने देता हूं ताकि हम मिस्टेक नहीं करें कभी भी. फर्स्ट वन, बॉन्ड 1, फेस वैल्यू इज 1 लाख, इंटरेस्ट इज 0%, मेच्योरिटी इज 1 year एंड यू आर गोइंग टू गेट 91,500. पहले हम लोग स्पॉट रेट्स कैलकुलेट करते हैं. बॉन्ड ए, अगर आज हम लोग 91,500 डालते हैं तो एक साल के बाद हम लोग को 1 लाख मिलेगा. प्रेजेंट वैल्यू इक्वल करना. 91,500 1 plus r raised to 1 is equal to 1 lakh. Therefore r is equal to 1 lakh divided by 91,500 minus 1. कैलकुलेशन किया हुआ है ना वहाँ पे. 1 lakh divided by 91,500 minus 1, we are getting an answer of 9.29%. 9.29%. Bond B, interest is 10%, maturity is 2 years and the current price is 98,500. यहीं से बूटस्ट्रैपिंग चालू होगा. बॉन्ड 1 को तो हम ZCB ट्रीट करके काम कर सकते हैं. बॉन्ड 2, मेच्योरिटी 2 years 3 years से अपना क्या चालू होगा? बूटस्ट्रैपिंग. बॉन्ड बी, करंट प्राइस 98,500, 1 2 year, कूपन 10%, 1 लाख का 10%, कहना इसे 10,000 आएगा, 10,000 आएगा और 1 लाख भी आएगा. तो प्रेजेंट वैल्यू बाय RO1 दैट इज 9.29% and present value of this will be RO2. This is bootstrapping. Do you remember this? Okay. Now 91,500 is equal to 10,000 divided by 1.0929 plus 1,10,000 divided by 1 plus r raised to 2 because it's a second year. Now go carefully. 98,500 is equal to 10,000 divided by 1 plus RO1, 1 plus RO2. So this is 9150 आ रहा है, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे. So अपना आंसर आएगा 98,500 minus 9150. I'm getting 89,350. So your RO2, if I'm not wrong, will be 1,10,000 divided by 89,350 raised to power half minus 1. पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से माइनस कर दिया. सो माई RO2 is equal to 1,10,000 divided by 89,350, 1 root minus 1 into 100. I'm getting an answer of 10.96%. पक्का? शायद टेक्स्ट बुक्स में अमाउंट रॉन्ग लिखा है. डिवाइड बाय 8950, इट शुड बी डिवाइड बाय 89,350. मैं भी चेंज कर दूं.
divided by 89,350. Correct? Acha. And bond C. Bond C now. Bootstrapping, दो बार. First one, currently trading at 99 and you have this values. So 99,000 आज है, एक साल के बाद 10.5%, 10,500, इसको RO1 से डिस्काउंट कराना है, 10,500 इसको RO2 से डिस्काउंट कराना है, एंड 10,500 एंड 1 लाख इसको RO3 से डिस्काउंट कराना है. पक्का? सो 99,000 is equal to 10,500 divided by 1.0929 plus 10,500 divided by 1.1096 raised to power 2 plus 1,10,500 divided by 1 plus RO3 raised to power 3. Slow and steady always wins the race. So I want you guys to please take up your calcies and do the calculations. First one, 10,500 divided by 1.0929 is equal to 9607.45. 99,000 is equal to 9607.46 और 47 कर दो, plus 10,500 divided by 1.1096, 1 and 2, 8528.18 plus 1,10,500 divided by 1 plus RO3 raised to power 3. So RO3 is equal to 1,10,500 divided by 99,000 minus 9607.47 minus 8528.18. I am getting 80864.35. 80864.35 raised to power 1 by 3 minus 1. Raised to power 1 by 3 cube और root निकालना है. Basically I taught you dirty powers, 6 steps. Square root 12 times minus 1 divide by denominator plus 1 into equal to 12 times raised to. Check करें. 1,10,500 divided by 80,864.35. Then we had root 12 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minus 1 divided by 3 plus 1 into equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minus 1 into 100. I am getting an answer of 10.97%. 10.97%. 9.29, 10.96, 10.97. So my term structure is equal to here 1, 2, 3. My spot rates are equal to term structure का spot rates are equal to 9.29, 10.96, 10.97. पक्का? Based on this term structure, we can calculate something. Copy करने की जरूरत नहीं, सारे solutions आपके book में है. We can calculate forward rates. अच्छा, कौन से forward rates निकाल सकते हैं हम लोग? We can calculate F12, F13 and F23. F12, F13, F23. F12 कोई फॉर्मूला नहीं दिया है आपको, बट एकदम सिंपल सी बात कही है मैंने आपको. हायर पीरियड बाय स्मॉलर पीरियड. So F12, what is a higher period? 2 years, 10.96, 1.1096 square divided by 1.0929. The whole raised to 1 by 1, because F12 का difference is only 1 year.
है ना, और आंसर हमें पर एनम चाहिए, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझा, -1। चलो कैलसी उठाओ फिर से हाथ में, 10.96 1.1096 इंटू स्क्वायर निकालना है, डिवाइड बाय 1.0929, raised to power 1 by 1 is 1 only, -1 into 100, I'm getting an answer of 12.66%. So that means second year का rate is 12.66%. First year you earned 9.29, second year you earned 12.66, and hence the average is 10.96. एंड ऑफकोर्स कॉमन सेंस बनता था कि अगर फर्स्ट ईयर में 9.29 कमा रहे हैं, 2 ईयर का एवरेज 10.96 है, तो सेकेंड ईयर यू आर अर्निंग मोर देन 10.96। चेक करो अपने बुक्स में, यू आर गेटिंग दैट आंसर और नॉट। F12 12.66%, क्लियर, जकास। F13 चलो आप बोलो, लार्जर पीरियड 3 years 1.1097 raised to power 3 divided by smaller period 1 year 1.0929 raised to power 1 by 2, because difference between 1 and 3 is 2 years. Difference between 1 and 2 was 1 year. 2 years -1. चकास ना, too good. चलो कैलसी फिर से एक बार, 1.1097 into square cube divide by 1.0929 square root -1 into 100 is equal to 11.82%. 11.82%। चेक कर लो अपने आंसर्स को। एंड फाइनली F23 1.1097 raised to power cube divide by 2 1.1096 raised to power 2, the whole raised to power 1 by 1 minus 1 again. Concept समझो? Too good. कोई doubts? Done. इसका आंसर मैं डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ। I'm getting an answer of 10.99%. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को F14 निकालना होता तो 4 फिर 1 फिर 3, सो 1 plus RO4 raised to power 4 upon 1 plus RO1 raised to power 1 by 3 minus 1. Got that? That's the forward rate. So term structure, spot rates, forward rates. कोई doubts? Too good. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन। इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन का मतलब है दैट आई हैव सर्टन लायबिलिटीज which is going to come at the end of 3 year, 5 year or 10 year. I want to invest in 2 bonds, and only in 2 bonds you can do. That's a limitation of this model, in such a way that even if my yield changes, I will be able to pay my liabilities in full. So interest immunization के लिए I have got only one thing to say to you right now, that your DA should be equal to DL. Your duration of assets should be equal to the duration of liability. And duration of assets calculate करने के लिए D, that is summation WX upon summation W, you will have to make it equal to duration of liability. Have a look at your books on page number 39. And this requires एकदम last line में duration of assets is equal to duration of liability, that is DA is equal to DL. Clear? Too good. Now I am not solving any question right now with you guys, but अगर आप देखेंगे अपने शीट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल के रखा है मैंने इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन का, आप प्लीज उसे सॉल्व करेंगे। Got that? Sure एकदम? Too good. अच्छा, फिर मैं आपको लेके जाता हूं समथिंग दैट इज नोन एज बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजंस में। बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजंस। Now what is bond refunding decision, guys?
is that we have a bond जो हम लोग ने 5 साल पहले इश्यू किया है और 20 साल का बॉन्ड है, वो 20 इयर्स का बॉन्ड है और ये बॉन्ड को हमें 5 साल हो चुके हैं. वी आर पेइंग अ कूपन ऑफ 12%. Currently the yield going on in the market is 10%. The coupon rate, interest rate मैं कम कर सकता हूँ, तो मैं नए bonds issue कर सकता हूँ at 10%. So I've got a very novel idea कि जो पुराने bonds हैं ना 12% वाले, उसे redeem कर देता है और नए bonds issue करता है जो 10% पे issue होता हो. तो redeem the new bonds, bring in the new bonds. और अगर ये सब करने से हमें कोई फ़ायदा होता है तो वी शुड गो हेड विद बॉन्ड रिफंडिंग. तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन आएगा कि वेदर वी शुड रिफंड द बॉन्ड, येस, और वेदर वी शुड नॉट रिफंड द बॉन्ड, नो. दैट इज़ बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन. मैंने इसको सिंपल करने के लिए आपके लिए एक बहुत सिंपल सा टेबल बना के रखा है और उसके लिए एक क्वेश्चन भी आपको अपने शीट में दिखेगा अलॉन्ग विद द सोल्यूशन. नाउ लुक एट द टेबल दैट आई हैव क्रिएटेड बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन के लिए. बॉन्ड रिफंडिंग, व्हाट डू आई डू इन बॉन्ड रिफंडिंग इज, यू नो, मैं कैलकुलेशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ. इफ यू कैन लुक एट द फर्स्ट टेबल, इनिशियल कैश फ्लोज, एंड देन द सेकेंड कैलकुलेशन इज रिकरिंग कैश फ्लोज. सो इनिशियल कैश फ्लोज एंड रिकरिंग कैश फ्लोज. इनिशियल कैश फ्लोज एंड रिकरिंग कैश फ्लोज. इनिशियल मतलब आज क्या होगा? आज ना 6 चीजें हो सकती है, A, B, C, D, E, F. Look into your calculation. 6 things. A, B, C, D, E, F. सबसे पहला कैलकुलेशन, रिफंड ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स और उसका वैल्यू आ जाएगा. ओल्ड बॉन्ड्स को रिफंड कर देता है. सो जो भी रिफंड करने का वैल्यू आ रहा है वो आप पूरा वैल्यू लिखेंगे and that value has to be outflow. ब्रैकेट्स में लिखेंगे because पैसा जा रहा है. If these old bonds are redeemable at premium, so we will charge that premium in P&L account and we'll get tax shield on that premium. है ना? Point number 2, tax shield on premium on redemption. And guys, this will not be outflow, this will be inflow. So refund the old bonds और उस पे प्रीमियम पे टैक्स शील्ड ले लो. सेकेंड के बाद थर्ड, इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स. इश्यू ऑफ न्यू बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स को इश्यू कर लेते हैं. सो जैसे ही आप नए बॉन्ड्स को इश्यू करोगे, पैसा आ रहा है, दैट्स इनफ्लो. पॉइंट नंबर 4, नए बॉन्ड्स को इश्यू करने के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो आउटफ्लो. सो पॉइंट नंबर 4, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन न्यू इश्यू, दैट विल बी योर आउटफ्लो. सो फर्स्ट 4 पॉइंट्स एकदम स्टैंडर्डाइज. ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करते हैं, उसके प्रीमियम और रिडम्पशन का टैक्स शील्ड ले लेते हैं. न्यू बॉन्ड इश्यू करते हैं, उसका फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देता है. सिंपल. ओके. पॉइंट नंबर 5, टैक्स शील्ड ऑन अनएमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ ओल्ड डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट. अभी अगर आपने नए बॉन्ड्स इश्यू कर दिए तो ओल्ड बॉन्ड का जो अनएमोर्टाइज्ड पोर्शन बचा हुआ है वो आप पूरा एमोर्टाइज कर देंगे आज और उस पर आपको टैक्स शील्ड मिलेगा. सो दैट विल बी द बेनिफिट, दैट इज इनफ्लो. पॉइंट नंबर E. एंड पॉइंट नंबर F, द लास्ट वन,
that is point number 6 for us, यहाँ पे मैं F लिख रहा हूँ, I'm writing numbers here, will be overlapping interest. Overlapping interest, that will be your outflow and total. 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है. I have covered up all questions in the world, guys. First one, पुराने बॉन्ड रिडीम, उसका प्रीमियम का टैक्स शील्ड. नए बॉन्ड इश्यू, उसका फ्लोटेशन कॉस्ट आउटफ्लो. ओल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट का बेनिफिट ले लो, और अगर कोई ओवरलैपिंग इंटरेस्ट है तो प्लीज़ रिकॉर्ड कर लो. क्लियर? झकास? टू गुड. दिस इज इनिशियल कैश फ्लो जो आज होगा. रिकरिंग कैश फ्लो, पॉइंट नंबर 2, रिकरिंग कैश फ्लो, पेज नंबर 42 पे जाइए. सबसे पहले 2 टेबल बनाना है आपको, ओल्ड एंड न्यू, एंड द फर्स्ट वन शुड बी पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट. दोनों आउटफ्लो, ओल्ड में क्या जा रहा था, न्यू में क्या जा रहा है, और पोस्ट टैक्स लेना बिकॉज इंटरेस्ट इज अ चार्ज, तो टैक्स शील्ड मिल जाएगा, सो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट. एंड सेकेंड, टैक्स शील्ड ऑन एमोर्टाइजेशन, डिस्काउंट हो या फ्लोटेशन कॉस्ट हो, जो भी था उसका जो हमें टैक्स शील्ड मिलते जा रहा है उसका बेनिफिट. ये बेनिफिट है, ये आउटफ्लो है, तो इन दोनों का नेट निकालना है. दैट इज बेसिकली 1 - 2 करना है, कॉस्ट है. डिफरेंस निकालना है, एंड डिफरेंस का सेविंग्स आ जाएगा. उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब PVIFA करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर. PVIFA करते वक्त ध्यान रखना, यू शुड यूज द करंट इंटरेस्ट रेट. करंट देखो PVIFA पे लिखा हुआ है KD, N, एंड करंट इंटरेस्ट रेट पे. इंटरेस्ट रेट में मतलब इंटरेस्ट मत ले लेना, KD करोगे. सो दिस शुड बी KD, N. अगर उन्होंने कोई दिया है डिस्काउंटिंग रेट तो वो यूज कर लो, बट अदरवाइज ऑलवेज KD यूज करोगे आप, और वो भी करंट, पुराने वाला कूपन रेट नहीं, नए वाला कूपन रेट. एंड वंस यू आर गेटिंग रेडी विद दिस टेबल, आपका आंसर हो गया गाइस, है ना? गॉट इट? इसके लिए क्वेश्चन डालकर व्हाट वुड माय सजेशन बी इज, आप एक ऐसा पहला टेबल बना लेना, और ये टेबल पे एग्जैक्टली खाली नंबर्स को फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ पुट ऑन करना है. And once you are done with that, you will finally get an answer. Correct? Too good. इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, and that concept was known as convertible bonds. कन्वर्जन वाला पोर्शन, उसके लिए आप जाइए पेज नंबर 42. आई गेस वहीं पे होंगे आप ये बुक में साथ में. पेज नंबर 42 पे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. Terms to remember: convertible debentures, or you can say convertible bonds also. Terms to remember: first one, conversion ratio. What is conversion ratio? Number of shares per bond. So when we convert a bond, or when we convert a debenture into equity, how many equity shares are we going to get? That's known as conversion ratio. Second, conversion price. Conversion price is equal to face value of bond divided by conversion ratio. Face value of bond divided by conversion ratio. That's known as conversion price. But actually ये price पे कोई काम नहीं करता है. So third ज़्यादा important है. That is known as conversion parity price is equal to market value of bond divided by conversion ratio. That is known as conversion parity price. Check करो. Conversion parity price is equal to market value of bond divided by conversion ratio. Clear? Stock value of bond. Fourth one, stock value of bond. ये बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे शेयर्स में, तो व्हाट विल बी द वैल्यू?
So is equal to conversion ratio multiplied by market price of share. Market price of bond नहीं, market price of share. फॉर एग्जाम्पल एक बॉन्ड के अगेंस्ट हमें 20 शेयर्स मिल रहे हैं और 20 शेयर्स का मार्केट प्राइस 20 है, तो 20 into 20 दैट इज 400. 400 इज द स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. कन्वर्जन रेशियो नंबर ऑफ शेयर्स, conversion price face value of the bond divided by conversion ratio, conversion parity price market value of the bond divided by conversion ratio, stock value of the bond is equal to conversion ratio multiplied by market price of share. Conversion premium, conversion premium, conversion premium is equal to market price, or we can say stock price of bond minus market price of bond. Market price of the bond is 200, stock price of the bond is 300. So जब हम लोग convert करेंगे, so what is the premium? That is market price, my mistake, conversion premium formula उल्टा लिख दिया मैंने, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्टॉक प्राइस ऑफ बॉन्ड. सो बॉन्ड कितने प्राइस पे चल रहा है मार्केट पे, माइनस उसका स्टॉक प्राइस, दैट्स नोन एज कन्वर्जन प्राइस, सॉरी कन्वर्जन प्रीमियम. मैं क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा. स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, दिस इज वेरी सिंपल गाइस. स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू नथिंग बट, अगर ये बॉन्ड कन्वर्ट नहीं होने वाला होता तो उसका आज प्राइस क्या चल रहा होता, बेसिकली आईवी ऑफ द बॉन्ड, दैट्स पीवी ऑफ कूपन प्लस पीवी ऑफ रिडम्पशन. क्लियर? एंड फाइनली वी हैव गॉट समथिंग दैट इज नोन एज डाउनसाइड रिस्क. डाउनसाइड रिस्क, what is the risk you are facing on the bond? So downside risk is equal to market value of bond minus straight value of bond divided by market value of bond, or you can say straight value of bond. market value रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, फॉर्मूला चेंज कर देना टेक्स्ट बुक में, into 100. सो बॉन्ड ये प्राइस पे मिल रहा है. Even if the stock price of the bond decreases, share price decreases, कितना भी डिक्रीज हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग कन्वर्ट करेंगे ही करेंगे. सो वी विल कन्वर्ट ओनली इफ यू आर फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबिलिटी. इन केस इफ यू डोंट कन्वर्ट, द मैक्सिमम यू आर गोइंग टू लूज इज इट विल कम टू द स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड. इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं जाएगा ना. इससे ज़्यादा अगर नीचे स्टॉक प्राइस ऑफ द बॉन्ड होगा ना, तो आई विल नॉट गो फॉर कन्वर्जन. पक्का? एक क्वेश्चन लेके मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ. हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन नंबर 6 इन योर बुक्स. The following data is related to 8.5% fully convertible into equity shares debentures of GAC Limited at 1000. Market price of the convertible bond, market price of the convertible bond was 900. एक बॉन्ड था जो कन्वर्टेबल था, वो मार्केट में 900 पे मिल रहा था. Conversion ratio is 30. Number of shares 30. Estimated straight value of the bond is 700. Estimated straight value of the bond is 700. That means if this bond was not convertible, तो IV was 700. But since it is convertible, वो market में 900 पे चल रहा है. And that simply means, guys, that 700 straight value था और market value 900 था. तो हम लोग stock value of the bond से compare करके मैं उसे समझाता हूँ. And price of the common stock is 25. 30. Face value of the bond 1000 by 30. So 1000 by 30. Is it 33.33? इसे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है तो मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं. By 30 is equal to 30 per share. 30 per share. Now what does it mean now? That if I buy a bond at 900 and I am going to get 30 equity shares, अगर मार्केट में इक्विटी शेयर का प्राइस भी 30 चल रहा है तो आई एम एट नो प्रॉफिट नो लॉस.
conversion parity, no profit, no loss. Are we clear? Pakka. Okay. Now what does it mean? 900 रुपीज़ में बॉन्ड खरीदो, उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, 30 इक्विटी शेयर्स मिलेगा, 30 रुपीज़ अगर मार्केट प्राइस चल रहा है तो 900 वापस मिल जाएगा. सो दैट इज़ कन्वर्जन पैरिटी प्राइस. बट रियलिटी में ये नहीं होगा. प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट विल नेवर बी 30, वरना तो पीपल विल ऑलवेज बाय द बॉन्ड एंड देन कन्वर्ट इन टू इक्विटी. इक्विटी हैज़ मेजर राइट्स, वोटिंग पावर. बॉन्ड्स में कोई वोटिंग पावर नहीं होता है, डिबेंचर्स में कोई वोटिंग पावर नहीं होता. सो स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड देखते हैं. कन्वर्जन रेशियो इज 30 इनटू व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ द शेयर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे हैव गिवन यू 25 इज इक्वल टू 30 into 25 is 750. So as of now हम लोग प्रीमियम में 900 माइनस 750 150 रुपीज पे कर रहे हैं. मतलब हम एक बॉन्ड खरीदेंगे मार्केट में 900 रुपए का, उसे इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो 750 रुपए के इक्विटी शेयर्स आएंगे. इन शॉर्ट 150 रुपया ज्यादा पे कर रहे हैं बॉन्ड में to convert it to equity at 750 so that we get the right. That's the premium. As simple as that. प्रीमियम कैलकुलेट करने का एक और सिंपल सा तरीका, 30 minus 25. What is 30? Parity price. What is 25? The price currently running. So 30 minus 25. Can I say 5 rupee per share you are paying a premium? And how many shares you are getting like that? 30. Answer 150 आएगा. You are paying a premium of 150 to get the conversion right. Got that? Simple ना? अच्छा, finally downside risk. Suppose अगर ये प्राइस 25 से 20 हो जाए तो 30 into 20 is it 600? 900 रुपए का बॉन्ड लेंगे, उसे कन्वर्ट कराएंगे तो 600 रुपी का इक्विटी मिलेंगे. दैट्स अ प्रीमियम ऑफ 300. बट इन सिंपल लैंग्वेज गाइज, वी विल नॉट लूज दिस 300. नोबडी विल कन्वर्ट. व्हाई नोबडी विल कन्वर्ट? बिकॉज उसका स्ट्रेट वैल्यू ही 700 था. तो लोग कहां तक लॉस बेयर करने के लिए तैयार है? 700 तक मैक्सिमम. 700 के नीचे चला गया ना शेयर प्राइस, तो पीपल विल नॉट कन्वर्ट ओनली. That is known as a percentage downside risk. So what is a percentage downside risk? Market value of the bond 900 minus straight value 700 divide by 900 into 100. 200 on 900 into 100. My percentage downside risk is 22.22%. समझा? एक बार लास्ट ट्राई करते हैं. आई एम गोइंग टू गेट 30 इक्विटी शेयर्स पर बॉन्ड. दैट्स नोन एज कन्वर्जन रेशियो. कन्वर्जन प्राइस में ज़्यादा एलॉबरेट नहीं करता हूँ. दैट्स फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो. कोई लॉजिक नहीं है. कन्वर्जन पैरिटी प्राइस इज इंपॉर्टेंट कि भाई इक्विटी शेयर कितने पे चलना चाहिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होएगा. सो मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो 30 रुपीज. आई एम गोइंग टू गेट 30 शेयर्स और अगर वो 30 रुपीज पे चल रहा है तो आई एम नो प्रॉफिट नो लॉस. स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड 30 चल नहीं रहा होगा. 30 चलेगा तो पीपल विल गो मैड. सब लोग ले लेंगे ये डिबेंचर. सो चल कितना रहा है? 25. 30 into 25 आंसर कम्स टू 750. सो 900 रुपए का डिबेंचर, इसे कन्वर्ट कराएंगे तो 750 रुपए का इक्विटी, 150 रुपया प्रीमियम. अच्छा, 150 रुपया प्रीमियम देने के लिए राजी हो तुम? विल यू पे इट? आंसर इज यस, बिकॉज स्ट्रेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 700. अगर ये कन्वर्जन फीचर नहीं होता तो 700 पे चल रहा होता. भाई अपने को 750 का इक्विटी तो मिल रहा है तो स्ट्रेट वैल्यू से तो ज्यादा ही मिल रहा है ना. वी आर हैप्पी. कहां तक हैप्पी? अगर ये प्राइस 25 से नीचे गिरता जाएगा तो कहां तक हैप्पी? टिल वी गेट 700. इसके नीचे अगर शेयर प्राइस चला गया तो भाई हम कन्वर्ट नहीं कराएंगे. तो हम इस बॉन्ड को नॉन कन्वर्टेबल ट्रीट करके भी मार्केट में 700 में बेच सकते हैं. गॉट दैट? And that is known as a percentage downside risk. Clear? Too good.
I'm a little bit short on time and maybe that's why I may be rushing up a little bit, but I guess this revisions are gonna help you too much remembering the concepts. So bonds एक बार finally guys देखो ये सारी चीज़ें हम लोग ने cover कर ली. Types of bonds, a quicker version of it. First one ZCB, coupon, fixed, floating. Fixed के अंदर plain vanilla, non-plain vanilla, callable, puttable, floating, and then we have finally perpetual bonds. Yield CY, YTM. CY coupon upon market price, YTM plain vanilla, non-plain vanillas. Floating bonds का कुछ नहीं कर सकते हो. Plain vanilla YTM is equal to I plus F minus P upon N upon F plus P divided by 2. Non-plain vanilla outflow is equal to inflow. Valuations PV of all the cash flows. Duration summation WX upon summation W. Risk ED MD. Effective duration is equal to P2 minus P1 divided by 2 into P0 into change in Y. And ED के बाद MD. Modified duration is equal to duration divided by 1 plus YTM. Term structure, years, maturity. Spot rates. Forward rates F12, F13, F14, F24. Got that? Interest immunization, DA is equal to TL. Refunding, current cash flows, future cash flows. Conversions, conversion ratio, conversion price, conversion parity price, stock value of bond, premium, straight value of bond, percentage downside risk or downside risk. Clear? Too good. That's it for the bonds guys. थोड़े जो extra questions है वो आप please solve करेंगे and इसके बाद हम लोग next chapter चालू करते हैं. चलिए.